चैतन्य चरितामृत मूल है, इनकी कथाएं होती थी। इसी प्रकार हम लोग द्वारिका, यूपी, हिमाचल की ट्रिप में और जगन्नाथपुरी, मायापुर की एक, इसी प्रकार महाराज जी की बड़े दिव्य चरित्र है। आप लोग देख भी रहे हैं कि इतने परिवर्तन भी नहीं है, तो बड़े सरल, बड़े दयालु हृदय। मंदिर में कोई यदि कुछ दान वगैरह मांगने के लिए आ जाता था कि भाई थोड़ा बाबा थोड़ा हेल्प करो, तो कहा चलो पूरा वैष्णव प्रभु के रूम में और किसी को भेजेगा एकदम ऐसे नहीं कि एकदम हमारे स्कूल में दूसरे को दान वगैरह थोड़ा देने के लिए कतराते भी है, लेकिन महाराज जी चुप के कैसे न कैसे थोड़ा बहुत उनको देकर अभी भी लोग ढूंढते हैं। जब आते थे मतलब वैष्णव महाराज कब आएंगे, वो राम इच्छा वाले तो ये ऐसी है, हमारा टिकट कर देंगे। इसी पर महाराज जी की स्वभाव है कि जहाँ पे प्रयोजन हो, ऐसे नहीं कैसे कहीं पे पैसे ऐसे डाल दो, नहीं, कहा जहाँ पे प्रयोजन हो, ऐसे जो जिसकी जरूरत है इसको हेल्प भी करते हैं। ऐसे दयालु स्वभाव है, बड़े करुण भी है। और इस परम पूज्य महाराज की चरण कमल में हमारा बहुत समय बिताने का, बहुत सारे लोग थे, लगभग बिछेर गया, चले गए बहुत दिन। महाराज जी एक दिन मेरे से बोल रहे थे, देखो मेरा सब मेरा कैसे दुर्भाग्य है, लोग आते बहुत क्लोजली रहते हैं, कुछ दिन बाद मुझे दर्शन ही नहीं होता है। वो कहा अंतर है, लेकिन हम लोग महाराज जी के साथ एकदम नया भक्त तो 8 महीने रहे, इसके बाद महाराज जी से साथ है। और आगे देखो जितना दिन चलेगा थोड़ी इच्छा से का प्रयास करेंगे उनके चरण कमल में आगे स्थिर रहकर हम अपने जीवन बिताने चाहते हैं। या परम पूज्य से वैष्णव स्वामी महाराज की जय, इसलिए भक्ति अनुग्रह जनार्दन स्वामी महाराज की जय। ओम स्वस्ति न गोविंद, स्वस्ति न अर्चितानंत, स्वस्ति न वासुदेव विष्णु ददातु, स्वस्ति न नारायण नरवै, स्वस्ति न पद्मनाभ पुष्पम ददातु, स्वस्ति न विक्षिक्षणः विश्वशः, स्वस्ति न शिक्षिषति ददातु, स्वस्ति न वन्यतये हरिः, स्वस्ति न अंजना सुन्दरं पद्मते ददातु, स्वस्ति स्वस्ति सुमंगल केशवन् भरति, स्वस्ति मे कृष्ण सर्वलोकेश्वरः काष्णदयाश्च पूर्वन्तो, स्वस्ति मे लोकपावन कृष्ण मामेव सर्वत्र, स्वस्ति गृहशीर्षं तथैव च सदाकाशनि सर्वविघ्न विनाशनं, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम अतन मधुसूदन मंगलम यतन हरि, विष्णु स्मरण मात्रेण कृष्ण स्मरण कृष्ण स्मरण अवधे सर्वविघ्नानि नश्यति, मंगलम शन्न संशयः। ओम माधव माधव वाची माधव माधव हिति यशवंत साधु सर्वकार्येषु माधव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब भगवान श्री कृष्ण नामकरण संस्कार हुआ, बोला ठीक है कोई बात नहीं, इतना विशाल से नहीं कर, स्वस्ति वाचन करके आप नामकरण कर देते, इसलिए ये संक्षेप में प्रोग्राम है। स्वस्ति वचन बोला विष्णु श्रमाते न सर्वज्ञ नश्यति, और सभी कार्य संपन्न हो जाते हैं स्वस्ति वाचन करने से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो रुक्मणी कृष्ण प्रभु जनार्दन महाराज आ चुके हैं, तो महाराज से निवेदन करेंगे। मैं दिख नहीं रहा, आप देखोगे नहीं तो फिर होगी ये बाइक पहुंच जाएगी। हाँ हाँ अच्छा, हरे कृष्णा। ठीक है, हमारे मध्य परम पूज्य भक्ति अनुग्रह जनार्दन महाराज आ चुके हैं, तो इस पवित्र उत्सव में हमारे से निवेदन करेंगे कुछ थोड़ा सम्मान अर्पित करने। His Holiness Bhakti Anugrah Janardhan Maharaj present now Sanyaas. So I will request him, please, in this the festivity, the festival. Today is the completion of 10th year of Sanyaas ceremony of Bhakti Ashraya Vaisnava Maharaj.
both of them. You know, तो माला बनाइए। अच्छा, अब तो महाराज जी को अभी तो पहना नहीं चाहिए। फिर तो मैं सोचा कि आपके लिए He's thinking that you came for his I came for all of you. But I will give her last my last. So अभी हम रुक्मिणी कृष्ण प्रभु से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज। इधर 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 आ जाइए। यस। ओम ज्ञानतिमिरस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय कृष्ण भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सरस्वती देवो आचार्य निर्विशेष कृष्ण कृष्ण वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु पतितानां कृष्ण भक्ति अंकजन से महाराज की भक्ति से महाराज की। तो आज ट्रांसलेट करेंगे। बहुत ही शुभ दिन है, 10वां एनिवर्सरी है दोनों महाराजों के साथ। और मैं उसमें उपस्थित नहीं था, जब मेरा उधर संन्यास से बड़ी हुआ था, बहुत दुख हो रहा था उससे सेवा नहीं आ पाया। लेकिन आज 10वीं संन्यास पालन का मौका मिल रहा है, तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे बीच में दोनों माता जी उपस्थित हैं और 10 संन्यास को बोली गए। और भगवद गीता में भगवान बताते हैं संन्यास की परिभाषा अलग अलग स्थानों पे। छठे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान बताते हैं, ना ही संन्यास संकल्प योगी भक्ति कश्चन, कि बिना संन्यास के ये कोई योगी बनता है। संन्यास विधि प्राप्त योगी करते थे। जो आप जिस संकल्प योगी भक्ति कश्चन, नहीं संन्यास संकल्प। अगर किसी को वास्तव में भक्ति योगी बनना है तो संन्यास लेना आवश्यक है। बाहरी रूप से नहीं, आंतरिक रूप से तो है। लेकिन मैं देखता हूँ पहले परम पूज्य भक्ति आश्रय स्वामी महाराज के अंदर बहुत ही विशेष जो संन्यास आश्रम के गुण में दिखाई देते हैं कि महाराज एक सन्यासी जो वास्तविक सन्यासी है, किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखता। तो ये गुण मैंने महाराज में बहुत देखा है, किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते। जैसा जो जैसी परिस्थिति, जैसा प्रसाद, जैसे कुछ भी मिल जाए उसमें संतुष्ट रहते हैं। एक बारी महाराज को अपने IIT गुवाहाटी में बुलाया था, उनकी हमारा बेस है और उनकी में ठंड का मौसम था, काफी ज्यादा ठंड होती है। महाराज के लिए अलग से कमरा रखा था और गलती से खाली एक कंबल रखा था, उसने कंबल पर्याप्त नहीं था। मैंने बोला था किसी स्टूडेंट को रजाई रखने के लिए, उसने रखा नहीं, कुछ पतला सा कंबल था। पूरी रात महाराज सो नहीं पाए, बहुत ठंड थी। अगले दिन फिर पूछा, महाराज ठीक है रात को नींद आई? ठीक है, बस ठंड ज्यादा थी। मालूम चला कि कम्बल जो था बिल्कुल ठीक ही नहीं था, फटा हुआ कम्बल था, उसको रिप्लेस ही नहीं कर पाए। ये पूरी रात महाराज ने ऐसे निकाल दिया, किसी को बताया नहीं। महाराज चाहते तो किसी स्टूडेंट को उठा के, किसी को उठा के कुछ कर सकते थे, लेकिन उस पूरे कष्ट को खुद सह लिया, दूसरों को कष्ट नहीं दिया। एक संन्यास का एक बहुत बड़ी बात है, किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखना, हमेशा संतुष्ट रहना। दूसरा महाराज का मैं जो देखता हूँ कि महाराज हमेशा सन्यासी को कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग, आज से पूरे वर्ष का एक एक दिन पूरा बुक। और उसके बाद भी महाराज इतने उदार हृदय हैं, कोई भी आ जाएगा, जैसे कोई भी किसी तरह के रिक्वेस्ट कर लेगा, महाराज के पास थोड़ा सा भी समय उपलब्ध है, महाराज उसको महाराज अपने शरीर के विश्राम को देने के लिए उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। से कहते हैं मन वाणी शरीर से पूरा भगवान को समर्पित सेवा में। गोपाल महाराज अक्सर महाराज के पीछे बोलते हैं कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ कि मेरा काफी जो लोड है ले लिया, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो और तीसरा तो मैं जो महाराज में देखता हूँ कि सन्यासी पूरे कम्युनिटी का एक लीडर होता है,
शास्त्रों को पकड़ किस प्रकार से महाराज कथा करते हैं, विशेषकर कथा करते हैं जिस तरह से कथा करते हैं कि जो श्रोतागण है पूरी कथा में प्रवेश कर जाते हैं। छोटा सा इंसिडेंट होगा, साधारण मैं बोलूँगा तो 5 मिनट खत्म हो जाएगा, आज से 2 घंटे तक समझाते हैं तो पूरा पिक्चर सामने क्लियर हो जाता है। ये महाराज का बहुत ही विशेष गुण है, इस गुण के लिए महाराज सबको बहुत ही प्रिय है। और जहाँ भी महाराज जाते हैं देते हैं, उनका बहुत ही सुंदर नाम मास्टर महाराज भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज। जिस किसको भी आश्रय चाहिए वो महाराज के पास आता है, उसको आश्रय जरूर प्राप्त होता है। His Holiness Bhakti Ashraya Swami Maharaj. So, Maharaj also has a very unique quality. Serving Maharaj. Gopal Krishna Maharaj. Yes. You don't have to translate. He's repeating it. हिंदी में बोलता है, हिंदी में बोलता You can speak in Hindi. है। तो परम पूज्य English is also. You speak in English. Most of them they know English. Yes. All of them. So why do you speak Hindi? Yes. So His Holiness Bhakti Ashraya Vaisnava Maharaj, very dear to His Holiness Gopal Krishna Maharaj. And Maharaj was at home, at least I've seen for the last 25 years. Maharaj accompanies Guru Maharaj. Serves him as a servant. Last more than 25 years. Maharaj goes to US and Russia. So and Maharaj is very sweet, super. Second and thirdly, Maharaj is very expert in management. Manage a place like Vrindavan, to be especially empowered by Vrinda Devi. Only then you can manage. So, Maharaj is very special quality. So, despite being in Vrindavan, it's very challenging situations, management challenging situations. I've seen Maharaj gives always his school. His Katha speaks, he speaks as per Prabhupada's purpose. His lectures, he elaborates Prabhupada's purpose very nicely. Very dedicated to Prabhupada's purpose, for Prabhupada says his purpose. He elaborates them. Six very nicely. Maharaj was with me, except for great fortune. In GPC college 2016, the Maharaj was with them on. Were there as students also. Are very humble. So we used to discuss assignments also. I used to discuss assignments. So I pray to both the Maharaj, please bless me so that I can also serve. I applied for Sanyaas Ashram, but I deserve it. But seeing your exalted example and your completing 10th year of your Sanyaas Ashram, so I beg at your lotus feet, please bless me that I can also serve the Guru. Hare Krishna. और कोई बोलना चाहेगा? हमारे पास तो कोई लिस्ट विस्ट अच्छा आओ, हाँ, धर्मात्मा जी जो हमारे मंदिर के Kartik in the courtyard of Krishna Balaram. So very memorable day, and my spiritual life started with His Holiness Bhakti Ashraya Vaisnava Swami Maharaj. That time Maharaj was Vaishnava Prabhu. So
when I was in Calcutta and I was inquiring about ISKCON. So I went to the ISKCON Albert Road in Calcutta. And that how sincere you are, and then you can come inside the temple. So I came and then I met Maharaj, and then Maharaj connected me to God. So that was my spiritual life started with uh, by Maharaj's mercy in 2006. And as Rukmini Krishna Prabhu mentioned, His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, our spiritual master, is very proud on both of them. Maharaj mentioned that, as Rukmini Krishna Prabhu mentioned, that Vaishnava Maharaj, he's sharing lot of load of Guru Maharaj in India because of Maharaj's health issues. Maharaj is not able to travel as he used to do earlier, and Vaishnava Maharaj is sharing lot of load in the form of preaching throughout the India. In the same way, His Holiness Bhakti Anugraha of Guru Maharaj in America, in different parts of America. And both of them, they're preaching very nicely and making devotees. As you can see, Vaishnava Maharaj hardly he comes to Vrindavan. And even if he comes only for just 1 or 2 days. And His Holiness Bhakti Anugraha Janardhan Maharaj also, he spends approximately 4 months at a time in America and different parts in America, preaching and helping our Guru Maharaj. So this is a very memorable day, and we pray both of their lotus feet that please shower mercy upon all of us so that we can also do some services in the mission of Srila Prabhupada. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare. तो धर्मात्मा प्रभु को बहुत धन्यवाद. That's last time. Maharaj, Huh? Maharaj said that Maharaj want to glorify. You said that you want to glorify Maharaj. You both also should say something. Yeah. हाँ बस सही बात है. हम बोल रहे थे फिर एक दूसरे से. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम राम. हाँ? हरे कृष्ण. हाँ हाँ. 4 आश्रमों में से श्रेष्ठ आश्रम संन्यास आश्रम माना जाता है. आप सभी जानते हो, गरीब व्यक्ति को कोई नहीं पूछता. और चूंकि हम कॉमर्स के स्टूडेंट रहे, जब भी हम प्रवचन करते हैं, हम कहते हैं देखो हम कथा कहानी नहीं कहते, गणित और विज्ञान, और विशेष उसमें गणित है. संन्यास भी एक गणित है. प्रहलाद महाराज जी ने नरसिंह भगवान के सामने कहा, विमुंचति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता तथैव पुंडरीकाक्ष भगवत्वय कल्पते. देख लीजिए, मेरे ख्याल में ये भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 10 में 5-6 नंबर शुरू होगा. विमुंचति, बोलो. यदा कामान सर्वान पार्थ, नहीं पार्थ नहीं होगा,
विमुंचति यदा कामान सर्वान, पार्थ नहीं होगा, अब कुछ होगा, क्योंकि प्रहलाद महाराज तो नहीं होंगे। हाँ हाँ, विमुंचति यदा कामान, बोलो, मानवो मनसि स्थितान तथैव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। तो संसार में भगवत पदवाच्य सर्वश्रेष्ठ पदवाच्य है। समस्त ऐश्वर्य, समस्त वीर्य, समस्त यश, समस्त श्री, समस्त ज्ञान और समस्त वैराग्य, जिनमें पूर्ण मात्रा में, दिव्य मात्रा में विराजमान भगवान। तो जीवात्मा संसार में रहते रहते प्रकृति के साथ घुलते मिलते एकदम दुख भाव को, गरीबी भाव को प्राप्त है ना। दुखी रहना, सड़ना, संतापित होना, एक दूसरे से कुछ मांगना, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना, इससे बड़ी लज्जा की बात क्या हो सकती है। तो भगवान ने यहाँ प्रहलाद जी से कहा, विमुंचति यदा कामा, जिस समय व्यक्ति अपने मन से सारी कामनाओं को त्याग देता है, मानव मन से स्थिता, मन से ही कामना उत्पन्न होती है और मन के द्वारा व्यक्ति उसका त्याग भी कर सकता है। तरीब उसी समय व्यक्ति भगवत स्वरूप को प्राप्त होता है, भगवत द्वाय कल्पते। तो कितना बड़ा लाभ है। और संन्यास आश्रम उसी स्थिति के लिए भगवान ने कहा, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्याग प्राहुस त्याग विचक्षित। भगवत गीता अध्याय 18। तो समस्त प्रकार के कामनाओं को जो व्यक्ति परित्याग करता है तो धीरे धीरे भगवत स्वरूप को प्राप्त होता है ना। ये कितना बड़ा गणित है। तब व्यक्ति संन्यासों को सम्मान करने लगते हैं। दंड धारण मात्रेण नरो नारायण भवेत्, तो शंकर संप्रदाय में कहते हैं जिस समय व्यक्ति दंड धारण भाग्य बनता। संसार में जो कौपीन और दंड धारण कर लेते हैं वो भाग्यशाली। भाग्यशाली माने संसार की छोटी छोटी कामनाओं को उन्होंने छोड़ा और भगवान की भक्ति को उन्होंने अपनाया, है ना। तो हम सबको सन्यास, चाहे कोई वेश धारण करे ना करे, भक्त होते ही उनको सन्यास लेना ही पड़ेगा। बिना सन्यास का काम नहीं चलेगा। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी भजन करने हेतु तो सन्यास लिया। नाम हो गया श्री पुरुष, क्या नाम था उनका, पुरुषोत्तमाचार्य, है ना। तो उनको पता था कि जहाँ कामनाएं होगी वहां भक्ति अहेतु की नहीं होगी। जहाँ अहेतु की भक्ति नहीं होगी, कृष्ण बड़े कौतुकी है और वो अहेतु की भक्ति के बिना रिझेंगे नहीं। तो सन्यास का अर्थ होता है एकदम काय मन वाक्य से ही भक्ति में लग जाना। इतास्मास्थाय परात्मनिष्ठा अध्यासितं महतमीरि महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरन्तपारम् तमो मुकुंदन घृ निषेवयेवा। भिक्षु ने कहा, मैं संन्यास आश्रम में रह करके इस तमस संसार को, अज्ञान से संसार को पार कर लिया। तो हम सबका बड़ा भाग्य है, चाहे वैष्णव महाराज हो, चाहे जनार्दन महाराज हो, चाहे गोपीनाथ महाराज हो, कोई भी संन्यास के लिए आगे बढ़ता है वो अपने स्वरूप उपलब्धि के लिए बढ़ता है। कई लोगों की इच्छा है कि संन्यास हम नहीं लेंगे ना, चाहे कच्छा मारे, लांग लगाए, पर मन में संन्यास लेना ही पड़ेगा। संन्यास के बिना भक्ति होगा ही नहीं। 6ठे अध्याय भगवत गीता में कहा, नहीं संन्यस्त संकल्प योगी भौतिक कश्चन। यही कामना तो भगवान से हमको जुदा करके रखा है। इसलिए मित्रों, सन्यासियों का सम्मान है, क्योंकि भगवत स्वरूप के करीब है। और दंड धारण का अर्थ होता है हम काय मनोवाक्य से किसी को दंड नहीं देंगे।
और हम तो महाराज जी के साथ रहे ही है। जनार्दन महाराज जी के साथ हम ज्यादा दिन नहीं रहे, पर हम लोग तो एक कमरे में लगभग भूपेंद्र महाराज और हम कई सालों बिताए, कई साल बिताए, और हमने बिल्कुल पास से अनुभव किए। सो महाराज जैसे सन्यासियों के लिए कामिनी कांचन से दूर रहना बिल्कुल सही है। कभी भी ऐसे बातें नहीं करते, धन के प्रति कोई स्पृहा नहीं है, और भक्तों के प्रति बहुत मीठा व्यवहार है। अपने लिए जो वैराग्य है, सही में अभी तो सन्यास लेके थोड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन तो जब ब्रह्मचारी थे कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने, फटे पुराने। और जैसे गोपेंद्र महाराज ने कहा, जहाँ चप्पल पड़ी रहती है 3-4 दिन पड़ी रहेगी महाराज जी की दृष्टि में। जब हम लोग कहते हैं कि महाराज चप्पल फट गई, क्या बात है, वहाँ 4 जोड़ी चप्पल पड़ी, एक उठा लाओ, तो बिल्कुल पुराने फटे, है ना। और पैसा का हम तो अ, गाड़ी में इंचार्ज रहे, जब हम स्कूल में चयन किए ना, तभी महाराज ने हमको गाड़ी का इंचार्ज बना दिया। हमने बुक बैग वगैरह नहीं करे, शुरू में ही इंचार्ज पोस्ट में रहे। पहले हमको, मैं जब आया तो हमको गाड़ी में भेजे इंचार्ज करके, भूपेंद्र महाराज ने हमको ठगा। मैंने कहा भाई किधर कैसे करते, किधर जाते हैं बताओ, ऐसी उल्टी गली में हमको छोड़ा जहाँ बहुत परेशान हम, उनको पता है। तो जो भी हो, व्यक्ति दुख से ही सीखता है, इसलिए हम दुख से कभी नहीं डरते। जितनी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम आएगी, तुम्हारे में सहन शक्ति बढ़ेगी, तुम और मजबूत हो। ये ध्यान देना, कभी भी अनुकूलता से व्यक्ति अच्छा नहीं बनता। जितने हर्ट से, जितने प्रतिकूलता, जितने उनको अपमान, तो आप जानना कि आप भगवान के करीब उतरे। भ्रात, आपको यमुनाचार्य जी कहते हैं, भ्रात तिष्ठ तरुतले पिटकीनाम ग्रामेषु भिक्षाम पट सम्मानम कलेति घोरगर्भम नीचापमानम सुधा। सन्यासी को चाहे कि सम्मान की कामना न करे, नीच अपमान कोई कर दे तो उसको अमृत माने, तब वृंदावन धाम का अनुभव। सो महाराज जी के साथ हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। एकदम फटे पुराने पहनते थे। तो एक तो मैं गाड़ी में इंचार्ज था, उसके बाद कुछ दिन हम बुक स्टॉल में हमको बिठाए, तो हमको पढ़ने में इच्छा थी, तो महाराज ने कहा वो तुम वहाँ पे फिट नहीं हो, तो हमको कैशियर बनाया। संकीर्तन डिपार्टमेंट में हम कैशियर है। तो 2 अलमारी रहती थी। जिस समय आप लोग इस समय पैसा, उस समय मैं कह रहा हूँ 2003 3 के 2 की बात है, 20-20 लाख रुपए इस अलमारी में, उस अलमारी में। महाराज जी को पता तक नहीं लगता था। उसमें हम लोगों ने सेवा करी है। जिस समय पैसा, सोना मात्र 5,000 रुपया था 10 ग्राम का, और कभी भी एक पैसा छुए नहीं, ना हम लोग छुए। हम थोड़े, ये उपेंद्र महाराज जी गाड़ी लेके जाते थे, हम भी जाते थे, वो जानते थे कि हम थोड़े खर्चीला है, तो उनको कंजूस करके पैसा देते थे, हमको 2-4 हज़ार रुपया ज्यादा देते थे। तो कहते थे उतना खर्चा, ये बिल्कुल पनीर नहीं खिलाते थे, हम रोज गाड़ी में पनीर खिलाते, तो इसलिए इनके गाड़ी के लोग हमारे पास आ गए, है ना। सो कई ऐसे एक्सपीरियंस है। और ये लोग क्या कर, गाड़ी गाड़ी कितने बजे लगाते हो, भूपेंद्र महाराज वगैरह कहीं, अरे हम तो 11 बजे तक लगाते हैं रात को, ऐसा करते। तो हमसे पूछते रमाकांत कब तक गाड़ी में, कहा महाराज प्रभु जी हमारे 6 बजे तक गाड़ी लगती है ना, ठीक है 6 बजे तक गाड़ी लगा पढ़ाई पढ़ाई। तो शुरू से हम लोग रहे, उनका वैराग्य बहुत प्रबल है। कामिनी और कांचन कभी उसमें फंसे नहीं, कितना पैसा आया कितना पैसा गया कोई कोई वो नहीं है। और जब देवकीनंदन प्रभु, सार्वभौम प्रभु और बृहत मृदंग प्रभु यहाँ तीनों प्रेसिडेंट बन के आए, तो वैष्णव प्रभु पर को थोड़ी सी कुदृष्टि पड़ी, तो इनको हटा दिए। मैं उस समय मैं सारा प्रमाण में देखा हूँ। तो हमारे पास 4-6 गाड़ियां थी, महाराज जी के पास को वो तो बस थे, कितनी गाड़ियां थी, पैसा बहुत थे, लेकिन इनको हटा दिए। नर्मदा महाराज जी की सेवा महाराज ने की, मैं खुद देखा, ये सब सीखने लायक। 15 साल, कितने साल, 15-20 साल, अचानक इनको हटा दिए। और नर्मदा महाराज जी के लिए इन्होंने सेवा करी है, रोटी वगैरह बेलते थे,
तो तब हमारे आंखों में आंसू आते थे कि महाराज अब प्रभु जी जब भी गाड़ी घड़ी चाहिए तो हमको, तब देवीनंदन प्रभु ने हमको लाइफ मेंबर का मैनेजर बना दिया, इनको ड्यूटी डिपार्टमेंट का So, ये सारी बात की सारी बात का साक्षी हम है, एकदम टॉलरेंट। मैंने कहा आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए, दुनिया ऐसी नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा कि वो जो सर्प था, भाई काटो मत पर फन कम से कम उठाओ, है ना। तो ना यार, क्या कहेंगे, जो भगवान की इच्छा होगी सो है। हाँ, हमको तीनों को कहा कि तुम जाओ नगर कीर्तन करो, है ना। तीनों को गाड़ी दे करके भेज दिए हम लोग वृंदावन में। सो बहुत कुछ हम लोगों ने झेला है। जीवन में मैंने देखा बहुत टॉलरेंट है। अब बिल्कुल जीवन में सरल सीधा भोजन जो मिला सो खा लिए, और पैसा कितना है कितना नहीं गया, ये तो मैं अनुभव ही बिल्कुल प्रैक्टिकल देखा। इसलिए आज तक भी हमारा सम्मान भरपूर है, 100% सम्मान महाराज का करते हैं, कभी ना मन से। हाँ, एक बार हमारा अनुभव हम कहते हैं तो हम ड्रामा के डायरेक्टर थे। मैंने एक नाटक लिखा, अहम भक्त पराधीन। तो उसमें कई सीन है। तो मैंने, अब हम दोनों उड़ीसा के हैं, ड्रामा के बारे में एक्सपीरियंस है, तो सीन मैनेजमेंट एक होता है। तो मैंने कहा महाराज उधर पे आप मैनेजमेंट करो और मैं इधर मैनेज करता हूँ। तो गोपेंद्र महाराज जानते हैं कि जब हम कुछ लिखा, हमारा माइंड एक जगह में लगता है। ड्रामा लिखेंगे तो उसी में ये कभी कभी हमको टोकता है, नहीं बुखार पड़ जाओगे, हमारे ऐसा होता भी है। सो जो सीन हमने लिखा, सीन चार्ट बनाया, तो महाराज जी को एक सीन चार्ट दिया और हमने पकड़ा। तो इन्होंने क्या किया, सर चौथे सीन में जो आने वाला है उनको दूसरे में छोड़ दिया। तो मेरे पास और कोई उपाय नहीं था, क्या करे। अब वो ड्रामा वाला बड़ा बहुत अपमानजनक बात हो गई। तो मैंने कहा अरे पर्दा डालो, तुरंत पर्दा डाला। जब पर्दा डाला तो हमको बहुत गुस्सा आ गया। मैंने कहा आपको उसमें ना हम थोड़े बहुत ही टेम्परामेंट हाई हो जाता है। आपको आता नहीं, आपने लिया क्यों, क्यों ऐसा किया। बहुत ही मैंने थोड़ा कठोर शब्द में कह दिया। लेकिन जैसे ड्रामा खत्म, इन्होंने हमको कुछ नहीं कहा, ये भी हमको डांट सकते थे, कुछ नहीं कहा। और एकदम जब वो ड्रामा वो प्ले खत्म हो गया, लोग नाटिका, देखो सहन शक्ति की यही प्रतिक्रिया होती है। वो कुछ कहता नहीं व्यक्ति, लेकिन ये फोर्स बहुत तैयार कर लेता है। तो हमारे भीतर बहुत जलन पैदा हुई। मैंने बहुत ही अपमान कर दिया, अरे उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो दूसरे दिन जा करके उन्होंने माफी कह दिया उसको, हाँ ठीक है ठीक। सो ये हमारा अनुभव हमेशा हमारा है। और जितने बच्चे आते हैं सबको अपने बच्चे की तरह स्नेह करते हैं। हम तो देखे हैं, जैसे गोपेंद्र महाराज ने कहा, कई लड़के आए कई चले गए, और शुरू से एक टीम के साथ रहने का नेचर महाराज का। संकीर्तन में भी थे, भक्त लोग आकर बैठते थे, 50-50 थे। ऐसा संकीर्तन का मैनेजमेंट कभी नहीं देखा। संकीर्तन जब महाराज जी ने छोड़ दिया संकीर्तन, उसके बाद संकीर्तन कहाँ रहा। वो बिजनेस चलता है, थोड़ा ऐसे व्यापार व्यापार दुकान चलती है, पर संकीर्तन जो है हमने देखा। और हम लोगों को इकट्ठा बैठा करके भागवत के दूसरे अध्याय हम लोग पढ़ते थे, अभ्यास करते थे। और गोपी गीत का जो शुरुआत महाराज जी ने कराया था। यहाँ एक छोटा सा था, कृष्ण बलराम बलराम हाल में हेतुदास नाम से एक भक्त थे। तो शालिग्राम पर सबसे पहले महाराज जी आप पढ़ते थे, हम लोग बहुत अच्छा हमारा रहा। तो 2013 में संन्यास हुआ था। महाराज जी से हम तो कुछ कह नहीं सकते, पर हमारी यही सद्भावना रहेगी कि महाराज जी, कामना यही रहेगी कि महाराज अपना आशीर्वाद हम लोग पर बना के रखें। और अपने संन्यास जीवन तो बहुत बढ़िया मेंटेन हो ही रहा है, पर हम आशा करते हैं कि संन्यास जीवन से थोड़ा और ऊंचा वाला जो है पद है, जिम्मेदारी वाला गुरु पद महाराज जी को जल्दी जल्दी प्राप्त हो जाए। आप चाहते हो, हमारी भावना है। तो बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग हैं। और में जब महाराज जी को, अरे हो ही जाता है, ऐसा नहीं
लेकिन हमारे इस्कॉन का सिस्टम है वो थोड़ा है, जो हो जाए तो मेरे ख्याल में सबसे अधिक अनुयायी महाराज जी कहे बने। जहाँ तक प्रेमी है, विष्णुभाषी है, सहिष्णु गणित जो है, वैराग्य के ऐश्वर्य है, और साधु का ऐश्वर्य बहुत अच्छे कपड़े कपड़े नहीं है, साधु का ऐश्वर्य है वैराग्य है। तो यही विमुञ्चति यदा कामान् सर्वान् मानवो मनसि स्थितान् तैरेव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। तो महाराज जी पर राधा रानी की बड़ी कृपा है, वृंदावन में रहते हैं, तो उनका जीवन थोड़े बीमार रहते हैं अब, पर चलने फिरने से थोड़ा स्वास्थ्य ठीक हो गया है। तो आप लोग ठीक से देखभाल करो, बढ़िया रहे। और जहाँ तक जनार्दन महाराज जी की बात है, वो भी बहुत अच्छे हैं, कीर्तन में बहुत अच्छे हैं, अच्छा भक्तों के साथ बहुत ही मिल करके रहते हैं। और खास करके जो ब्रह्मचारी भक्त है उनको उठाना चाहते हैं। और महाराज जी का हमेशा प्रिंसिपल है, वो एक सीनियर भक्त जूनियर भक्त के साथ रहे, है ना। हम लोग जो कहते थे नहीं सीनियर भक्त अलग रहे, जूनियर भक्त अलग रहे, ना ना नहीं, महाराज कहते नो 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 नो, वन सीनियर मस्ट भक्त डिवोटी मस्ट बी with the junior devotee so that they will be in control and they can learn from the senior devotee। और बाकी महाराज कीर्तन में अपने जो प्रभुपाद जी के प्रति डेडिकेटेड है, बहुत पंक्चुअल है, जीवन बहुत अच्छा है। राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करते हैं दोनों का जीवन अच्छा रखे, निरोग रखे, स्वस्थ रहे और वृंदावन के लिए समर्पित रहे। हरे कृष्ण। अब हम दोनों महाराज से निवेदन करते हैं, एक दो, अच्छा हाँ ठीक है। अब हम दोनों महाराज से निवेदन करते हैं, एक दूसरे के लिए कहिए, प्लीज स्पीक फॉर ईच अदर, you glorify him, he will glorify you. This is nice. चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे Hare Krishna. So I came here in Vrindavan 2002 after being in North America, specifically in Canada, for 13 years. But then before coming here, I was in Delhi for 5 years. But initially, my intention to come here, Vrindavan, after being in management also in Canada, book distribution, was to join Ayandra Prabhu and its 24-hour Kirtan department because, yeah, I like Kirtan. And he asked me also to join his team. But Maharaj, he says, why don't you come with me? So he pulled me away from Vrindavan to go to Delhi. And then in Delhi, I was in management also. But specifically, I was asked to join in his program to travel in Russia 1998, 97. But before that, also, before traveling, that was the opening of the temple. And in Delhi, the inauguration, Vajpayee. Yes. And then 2002, after 5 years being in Delhi, I was in charge of the brahmacharis there also. Used to wake up the brahmacharis for Mangal Arti. They will remember me for that for sure. And I was vice president in Delhi Temple under Kratu Prabhu. He was the president. But then Guru Maharaj, he brought me back here to be part of Vrindavan management
I was general manager, but I don't have any really clue of what's going on that time. I just somehow be able to maintain myself by doing sadhana strictly as much as possible and not to commit any Vaishnava para, especially in it's very easy to commit Vaishnava para. So we have to be very careful while you are here. How you can maintain yourself to be in Vrindavan is to not to commit any aparat. And then there's not much interaction between myself and Vaishnava Maharaj because I know he was very busy also with his Sankirtan, as you mentioned. He was going, traveling Sankirtan. And because I'm busy also with the management, so there's not much interaction. But I can still remember that Balaram Hall when at that time there were many Shilas being worshipped. Shalagram Shilas. Shaligram. And Maharaj introduced, you will do also their Damodarastakam. That time. There's no Gopi Kit at that time yet. After that. Yeah. So, and before that being dissolved, before the whole Shalagam Shila being distributed, one day we just found there's not no single Shalagam Shila there. I think it was Shrestha Prabhu Yeah. who did that. Yeah. But somehow I managed to collect some Shalagram Shilas from there also. So Maharaj is doing his own thing, being engaged in devotional service. And myself also busy somehow during summer. But then, yeah, I just decided, what shall I do in my life? Shall I continue and just be a brahmachari? Or what? Because I know I'll be a failure if I become a grihasta. I don't think I'll be successful in that way. And then I heard Maharaj is going to apply for sannyas. Remember that, Maharaj? I asked him, is that true? So I thought to myself, what shall I do? But now he's going to apply for sannyas. So I decided also, okay, let me follow Maharaj. Let me follow in his footsteps. But one thing I can say is Maharaj is very austere. He's very austere, so much, even though our health is also like similar. Well, he knows, and I know. Yeah, similar in such a way that, we have to be careful with mitai. You have sugar? Everyone has sugar. But some, because even though we don't eat very opulently, I mean, you can ask, I think you can ask. I mean, I don't eat so much also. And we don't eat like very luxuriously, but somehow our body composition, our metabolism is that, we cannot really absorb the sugar so much that it will be a problem. So there's that similarities are there. But when we took sannyas, our Guru Maharaj says, both of you should stay in Vrindavan, that you should not travel. I think that is only work for me. Because, yes, like Kshetra sannyas, unlike Maharaj, he traveled like what, maybe 300 days in a year, maybe less than 65, less than 2 months he will be in Vrindavan, which is very highly commendable in spite of so many struggles and
like especially traveling, it takes a lot of your energy. Like our Guru Maharaj, he traveled, I've been traveling with him for the last 25 years or so, since 1997. And now it's taking the toll, traveling. You age fast, and you also your energy gets sucked up so much because the irregularities of sleeping and eating and resting. I don't know how he's able to do it. Um, as Dharmatma Prabhu says, I travel maybe 3, 4 months in a year or so, but I think I'll be traveling more. I hope so. Management is good, but at times also for me, I see that I can do more. I can do more in being in the management. Like I can do more means I can share more of what Vrindavan is. And in this way, I will follow in the footsteps of Vaishnava Maharaj, to be traveling more. Uh, I can see it in the future that maybe like half and half, 50% being here and just be here only during the festival times because that is the most needed to be here to organize things. And I'm sure I can see it. But hopefully also that I'll get more strength in that way, especially my voice. In Krishna consciousness, the most important senses are the voice and the ears. If you lose your voice, then it's difficult to communicate. And now it's happening practically in 1 year. I will lose my voice 3 times or something, 4 times. But at least the hearing's still there. But if there's no way of how to communicate, because in ISKCON, Christian Consciousness Movement, this is the most important practically, how to communicate. We're blessed by our Guru Maharaj to be awarded sannyas. I know I don't have so much no qualification at all, and Maharaj has a lot of good qualities, being in Vrindavan, and me being not from India, from the Philippines. um, I don't see myself having any good credits that I accumulated in the past. It is only by the mercy of Guru that somehow he might have seen some qualities on me that if I continuously to be strict with my sadhana, especially in Vrindavan, uh, if you're not strict with the sadhana, then you're not in Vrindavan. Yeah. You know, our brahmacharis, I try to uh, encourage them, I try to motivate them, I try to inspire them because uh, as sannyasi, we're a resident sannyasi is here. It is our duty to help the brahmacharis to grow up in Krishna consciousness or make more and more progress. Just like recently, we had 2 sannyasis been awarded to them. Uh, His Holiness Bhakti Krishna Swami and His Holiness Radha Shamananda Swami. So I can foresee that the potential of our brahmacharis here to be taking up the very, very important role in our movement to be sannyasis uh, is very, very uh, highly that's going to happen.
in the future. And therefore, it is only expected for those who are in Vrindavan, who lives in Vrindavan, especially the ashramites, those who live in the ashram, to be ideal in their character, everything. Mm. Because Vrindavan is meant not just for enjoyment. If we enjoy a lot here, we have feast every day practically in Vrindavan. But it is especially meant for learning how to be renounced, how to be on the platform of giving up everything and surrendering everything to Krishna. As Srila Prabhupada says, that I want you all, my disciples, boys and girls, to be sannyas. Because sannyas is not just a change off from yellow to white, purifying one's heart, purification of one's heart. Uh, it is not just a matter of when we took sannyas that ultimately that's it, we're perfect. No, we still have a lot of anarthas to be eradicated. It's just like I was reading the other day. I'm going to be short now. I was reading the other day. There are three types of bhakti. There is sadhana bhakti, which includes Vaidhi sadhana bhakti and Raganuga bhakti, which the preliminary stage to attain prema bhakti. Our goal is to attain love of God. Everyone, whether you're grihasta, brahmachari, sannyasis, or vanaprastha. The means, the sadhya, is that we have to engage our senses, our mind, our body, and our very self in Krishna consciousness to attain the sadhana, yes, the sadhana and the sadhya, to attain that most important thing, to attain love of God. So from sadhana to sadhya. But then there is one type of bhakti which is in between. In the beginning, we're fully contaminated, our senses, our mind. But then there is the other type, which is called bhava bhakti. In the bhava bhakti, that means you're almost perfect, but still there's a little lingering of anarthas that needs to be burnt. An example was given, just like Jada or Bharat Maharaj. He took birth. He was in the Bhava Bhakti already. And he fell down. He became attached to the deer, that he became a deer. So he has to take birth as a deer, and then Jada Bharat. Then after Jada Bharat, he attained love of God. So what to say of us? If we still have this attachment even to one rasgula or a gulab jamun, then we may have to take birth few more. But Prabhupada says we can take only one lifetime and we can go back to So I'm very happy with this renounced order. And I just pray that there's going to be another, maybe, hopefully, if we can make it 30 more years, because we're already in the 60s now. Then 90. Yes, why not? Yes. Because Philippines is very near to Japan. Every Japanese cross 110. Yeah, but not all of them. There's a village. There's a village there. But again, because of the lifestyle of ISKCON sannyasis,
of traveling and very irregular timings. I travel like right now. I'm gonna go to the Philippines and I go to Dubai and then I'm going to Mauritius. You know, it's a lot of time changes. So if we can live for another 30 years, which is hopefully it'll happen, ceremony. then you can have another what? Every 10 years or 3 more ceremonies. Sannyas ceremony, eh? Yeah, some are looking at Swami 50 years. Guru Maharaj, maybe, I don't know, when it took 82, right? So 82, 92, 2002, 40 years. Yeah. Huh? Yeah. It's not so easy, and especially in this day and age, pollution in Vrindavan, you know, the traveling, it takes a lot. It toll your health. Yeah, if you can make it till the 90s, I don't know what's my astrology says. Maybe Maharaj will live for 100 years. But we pray because that we can share more Krishna consciousness to others in that way. Thank you. Hare Krishna. Gurave Gaurachandaya, Radhikaya Tadalaya, Krishnaya Krishna Bhaktaya, Tadabhaktaya. It's already going to be 3. Though it's 7. We were supposed to stop at 2, but somehow or other ISKCON time. it's so already many of you know this degraded soul, but somehow we are in this ashram. And that day, this get together here today to remember that day 10 years before in 2013 in the courtyard of Krishna Balaram temple. Oh, we have to change the danda. My danda is longer than his. So I told Maharaj, we exchange danda. I'll take your danda. I remember that. Yes? Yes. Finally, our both dandas came from Mayapur. Mm, On some mistake, he somehow then I take it. mm. I can manage with somebody, something. So that day was many of you were maybe present there. It was really jam packed. Bhurijan Prabhu specially came and he spoke something. Bhakti Ashraya Maharaj, Bhima Prabhu, Nityananda Prabhu, and Bhakti Charu Maharaj. Janananda Maharaj. Janananda Maharaj. Bhakti Charu Maharaj he spoke also. Yeah. And I remember I recommend Gopendra to Bhakti Charu Maharaj. First I recommend Krishna Balaram. Then I Maharaj, are you sure? Maharaj, he is with me. So, as Janardhan Maharaj mentioned, in the whole assembly, when Maharaj was giving, awarding sannyas to both of us, he told, so now I am giving sannyas to both of you. I am telling you also, both of you should not leave Vrindavan, stay in Vrindavan. Yes, in that particular ceremony also, you can see the record. You can see the कम से कम 30 साल से ज्यादा महाराज के प्रयास है महाराज इसलिए भ्रमण ना करें लेकिन भ्रमण रुकता ही ब्रह्मचारी समाज में संकीर्तन करने में जाने की मना करते थे लेकिन फिर भी चले जाते Guru Maharaj used to say you don't travel but he always travel actually. He's following Guru Maharaj's order. Because being engaged in Sankirtan means you're not going anywhere. Yeah. Actually, first time when we were planning for sannyasi at that time, Bhakti Gaurav Narayan Maharaj, his name was Jagannath Puri. He and me were in roommate staying. Radharan Maharaj was at that time Brahmachari. So Radharan Maharaj, Bhakti Gaurav Narayan Maharaj, Prabhupada and myself, before
recommended for sannyas, and you have to complete Bhakti Shastri and complete and do. So then, Sampachagoda Prabhu at that time vice president, Mahanprabhu, they came and they said, no, we will not recommend you. They went to Guru Maharaj and said, no, we want him in management. So now he cannot take sannyas. The other, so then they stopped me. They stopped me, keep my paper. I said, no, you cannot apply for sannyas now. I then forget. I said, and this time sannyas, I never think of EB, even Radhanath Swami Maharaj, Guru Maharaj, Gurujan Prabhu, Kadam Khan Swami Maharaj, many 8 members. They have Vima Prabhu, they decided and they told me, you can apply for sannyas. So by their order, somehow or other, I tried. And the history of that Salagram temple, now I don't have time to tell. Sometimes maybe again I'll tell what is the history, what it happens. It happens because of Prabhupada Maharaj only. Yeah. Otherwise, Janardhan Maharaj, when he used to come, he was so attached to Giriraj Sila. He used to always worship. And Guru Maharaj, Gopal Maharaj was totally anti of him. He was very much going to temple. He was never keeping any deity with him. And he was telling him, why you are keeping worshipping Brahmachari? You should be in temple. Temple worship. But now Maharaj has a big temple with him. And I was totally following Maharaj. No, I will not keep any Sila. But Prabhupada Maharaj, we are together. So he was serving in Andhra Prabhu's department. We are close, same, almost adjacent room. So Andhra Prabhu gave Sila to Prabhupada Maharaj. When Prabhupada Maharaj left Kirtan party, he came to me, he said, what to do now? I have the Sila. And then he said, come here. Then I arranged the room. Then slowly, he had 250 number. It says Salagram temple. And then we started all another Karikram, everything, temple, Gopagit, everything started. Anyway, so in 2013, when then I thought, now Maharaj told, and everybody told, every authority there, I have to again in management. I was thinking what to do, Maharaj. So then 3 days after, at that Brahmananda Prabhu, I think many of you have seen Brahmananda Prabhu as the dear most disciple of Prabhupada. He was staying here. So he saw me in front of Krishnavaram in the temple hall. He catch me. We had a good relation. So catch me. He said, now you should travel. Now you should travel. You should not stay in Vrindavan. I told Guru Maharaj told me, I will speak to. He will say, I will speak to Gopal. I will speak to. You don't know, no problem. Then I said, now it is authorized in front of Krishna Balaram only what to do. So I start traveling. Now it is increasing and increasing. And though it is challenge, it's really draining out our energy. But still, irregularity of sleeping, eating, and everything. But still continuing. But now Maharaj is happy also. He's saying, he's telling me to go Burma, go Manipur, go Surat. Everywhere he's sending me now. Before he was telling, no, stay in Vrindavan. But now he's increasing my responsibility, increasing traveling. So this is 10th year somehow or other, by the grace of Lord and devotees past. So I pray, who are assembled here, all the devotees of Vrindavan, I seriously praying from my core of my heart at your feet. So please bless me, pray for me, that I can continue till last breath this ashram and continue to serve Guru and Guru Parampara and the mission of Srila Prabhupada tirelessly. Hare Krishna. Janardhan Maharaj expected more 30 years. How many years he expected? I am telling till breathe. Till death I It's can it's 40 years. no, 30 years is a lot of years. More. I mean, the lifestyle, our lifestyle, if we, don't take care of our health, then it is not possible to do that. It is not possible. As Prabhupada says, health first. And we're not getting any younger anymore. 60 plus is in this age is, as Prabhupada says, 70 years means old age. Yes. That means we have 8 more years and we're already old. So we both are now senior citizen. Yeah, we're senior citizens now, 60 plus. 60 plus? Yeah. Yes, both are 60 plus? Yeah. When we book ticket of Maharaj, na?
We book senior citizen in train. सीट मिल जाता है. सीट मिल जाता है. हरे कृष्ण. Okay. आरती आरती आरती. But Artik. No. Artik is for Already. Prabhupada only. Yes. only 2 minutes. ISKCON every time is 2 minutes. सुनो आरती करो 2 मिनट. हरे कृष्ण. क्या करेंगे क्या करेंगे आरती करेंगे. हरे कृष्ण का हरे कृष्ण. ठीक है. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कोई वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ.